Now, most important topic which we are going to discuss, number one is arrival of what? Foreigners and what? And their influences. Now this chapter is going to be important for both main and preliminary examination, and first among those who came during this period, they were Indo-Greeks. So next few minutes we are going to focus only on Indo-Greeks. Is that clear? And all the relevant questions related to Indo-Greeks you should know in half an hour. Whether you studied history ever in your life or not, I'm sure most of you studied history last time when you were in 10th standard, roaming in shorts, am I right? And after that you left history. Why you left history? Well, I'm not asking you only. That is because history, geography, badi bewafa, raat ko padi, subah ko safa. You know this? You don't remember the facts and the figures, and you thought it is very boring. Then your parents must have told to go for engineering, medicine, this, that. Luckily in IAS exam, they are forcing you to read it. And if you know our history of ancient, medieval, modern, you would understand current India and current world. Are you getting? When you know the history and culture, you can become a good administrator. So good administrator must know the country very well, holistically, not only a subject like physics or chemistry or biology. Are you getting now? Now, for our exam point of view, what are those things which we have to know? What I have done, that divided into sub points. So you have to write whatever I am dictating, understand and try to catch it. If you find any difficulties, you can ask. Indo-Greeks were also known as, write it down, also known as Bactrians. Bacteria nahi. Bactria is a place in Afghanistan. So the people who came from Bactria, originally Greek, settled in India, so historians gave them Indo-Greeks. I hope it is clear. You heard the term Anglo-Indian? Who are they? Who are they? Anglo-Indian. British तो बहुत सारे होते हैं. सारे British Anglo-Indian होते हैं क्या? जरूरी है, उल्टा भी हो सकता है ना? One of the parent is Indian and one is English. जब अंग्रेजों की इंडिया में हुकूमत थी 200 plus years, so large number of English were living in India. So generally some father was an English, some mother was an Indian. तो जो उनके बच्चे होते थे उसको बोला गया एंग्लो इंडियन. अभी थोड़ा उल्टा हो रहा है. अभी आप अगर दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर के एयरपोर्ट पर देखोगे तो बहुत सारा इंडियन फादर, अमेरिकन मदर. अक्सर मैं उनके बच्चे का रंग देखता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग कलर होता है ना? तो दिस इज बिकॉज लॉट ऑफ यूरोपियंस आर कमिंग in IT and other sectors. Indians are going and marrying. So what point you have to understand, we people all belong to a particular tribe in ancient time. Over a period of time, we lost our tribal identity. Some people have maintained their tribal identity. These are those people who were originally Greek, settled in India or what is today Pakistan, Afghanistan. So before coming to India, they were living in Bactria. So historians also called Bactrians. Now write two great kings. Two great kings of this group. A. Demetrius in 2nd century BC and B.
Menander also in 2nd century BC. Demetrius and Menander. Who were they? Two kings. Of which group? Indo-Greek. Which period? 2nd century BC. You know, the period of many of these rulers are not exactly known in history because the records are not very well available. And the more we come in medieval and modern period, we will know more about their period. For instance, when we will discuss about Akbar, you would find in any book, good or bad, magazines or newspaper, Atiritank or Visheshank, you would always find this period. No book can ever give you Akbar as a ruler between 1555 or 1557. This is because the records of Akbar period is very well documented. We even know the date on which he was coronated, that was 14th of February. We even know the day was Sunday. Kitna precise hoga? Are you getting or not? Babur was born on 14th of February. No, that I don't know. जरूरी थोड़ी है कि 14th February हमेशा संडे ही पड़ेगा. ये किसने बोला तुमको? Akbar was coronated on 14th February. Shahjahan was coronated on 14th February. समझ आ रहा है? Since then, India is celebrating 14th February as Valentine Day. अब समझ में आया? ये लिखना मत आप, ये तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ. 14th February की क्या importance है? Can anybody tell me? Why people celebrate Valentine Day? Saint Valentine was executed. There are different stories. One story is that in ancient Roman Empire, during a crisis and war period, all marriages were banned by the king. Saint Valentine protested and performed some marriages. Then he was arrested and executed on that day. So the lovers since then started celebrating that day as Valentine. ये कहानी है, हिस्ट्री में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है. So historians would never tell what is that, but popular perception is story. Anyway, what my point was, when we talk Akbar, when we talk about Mahatma Gandhi, you all know that Gandhi was born on 2nd of October and he was shot dead in 30th January. This is beyond doubt. But this kind of years and centuries are not very well known. Why I am saying is because when you would study on your own, you would always be thinking, इसका पीरियड तो याद नहीं है अगर दिया हुआ तो याद करना पड़ेगा. So do not worry. Dates are nowadays not they are asking like this. If you check it last 10-year questions of prelims, you would not find any question on date. There are questions based on date like chronology, which of the following event took place first, second, third. That is easier rather than to remember this type of date. So do not worry about the date. Is that clear? Menander was known, write it down, in India as Milind. In Sanskrit, he was called as what? Milind. And with this one book, you have to write Milind Panho, written by Nag Arjun, who later joined Telugu cinema. लिखना मत आप, सुना है ना नाग अर्जुन का नाम. Nag Arjun was also known as Nag Sen. Which book he wrote? Milind Panho. Which language? Sanskrit. What does Milind Panho means? Write it down. It means questions of Milind. Who answered? Nagarjun. Nagarjun was a Buddhist scholar. Of which century? Can you guess? Second century what? BC. You know, there was a question 4 years back in your prelims, and you can check it.
the statement was, which of the following statement is wrong, right? And one statement was, Nag Arjun was a saint in medieval period, a bhakti saint in medieval period, right or wrong? Wrong. कितना आसान लग रहा है यहाँ? यकुम जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछेंगे क्या हाल है, सही है ना? तो अभी तो याद है, दिसंबर तक याद रहता है, यानी अगले साल तक याद रहता है कि नहीं? That is very crucial. I hope you would remember. Milind, I have mentioned here 3 important name of persons. Can you tell me those 3 names? 2 kings and 1 scholar. Tell me. Demetrius, Menander, Nag Arjuna. Then I mentioned a book. Milind Pano. Language. What does the book mean? Can you guess what could be in the book? This is about if question answer. So naturally some curious questions asked by Milind. So this is about some of the philosophical aspects of Buddhism asked by king, answered by Nag. इतने काफी है, अब आपको बुक पढ़नी नहीं बोलेगा कोई, इधर आप वो जाओ मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, मिलिंद पनो ढूंढ के पढ़ो, ये कभी नहीं आएगा. बट इतना तो पता चल गया ना कि एक किताब है एंशिएंट पीरियड में, मिलिंद पनो, जिसके राइटर नाग अर्जुन, उन्हीं को बोला जाता है नाग सेन. लैंग्वेज संस्कृत. दिस इज समथिंग अबाउट फिलॉसफी related to Buddhism. That exactly what is expected from you people. Topic to topic, within topic, subtopic to subtopic. Like next, contributions of Indo-Greeks. Okay? So write it down. They settled in northwest India with Takshila as headquarter, which developed during their period. Have you heard this city? Takshila. 4 years or 5 years, maybe 6 years back, there was a question on Takshila. So, how the questions can be predicted about a city? Yes, I am focusing about a city or a site. तो ancient to modern, जैसे कोई सिटी आए तो सबसे पहले उसकी ज्योग्राफी देखो, कहाँ है वो? नहीं, मैं इसकी सिर्फ नहीं बात कर रहा हूं, मैं एक जनरल फॉर्मूला दे रहा हूं कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है एंड हाउ टू स्मार्टली प्रिपेयर अबाउट अ सिटी या साइट. आर यू गेटिंग नाउ? एंड दिस अप्लाइज टू ऑल सच साइट्स एंड सिटीज ऑफ एंशिएंट टू मॉडर्न. तो सबसे पहले देखो कि वो नदी कौन सी है जिसके वो किनारे बसा था. आसपास देखो कोई बड़ा हिल या माउंटेन रेंज है या नहीं है. दिस ईयर दे आस्क्ड 4 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. उसमें एक बौद्ध गया था, उसमें एक और कौन कौन सा था, डू यू रिमेंबर? दे सिमिलर. और वो पूछा था हिल कौन कौन सा है, ये राइटली मैच्ड है या रॉन्गली मैच्ड है. यू आर गेटिंग नाउ? सो इफ यू हैव रेड केयरफुली कि बौद्ध गया के पास साहब वो अजंता हिल नहीं है, समथिंग लाइक दैट उसने दिया था. छोटा नागपुर प्लेटो है कि नहीं है. दिस इज फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, यू हैव टू नो लिटिल बिट हिस्ट्री ऑफ दैट सिटी एंड कल्चर, whether it is important for some religious reason, whether it is important for trade and commerce reason. Within culture, whether it had some educational institution, whether it was politically and militarily important. So Takshila was educationally very important. It was first learning center in India. First learning center in India at which place? At Takshila. You at Nalanda?
You got Vikramshila. What are these? Famous for learning centers. So in ancient history, the oldest learning centers, some people say university, which is not correct, because university is a modern concept which was set up first time by British in 1857 at Calcutta, Bombay, Madras. These are the first modern universities in India. Which year? Quickly? 1857. Which cities? Quickly? Calcutta, Bombay, Madras. Which of the three still exist? All three exist. Good. How many universities in India? 45. Central University, sorry. 45 तो सेंट्रल बताया था. Around 634 to 635 universities in India, out of which 400 plus are government, rest 100 plus are private universities. In America, 2400 universities for 30 crore people. We have 635 for 1.25 billion people. How many Indians are graduates? Out of 100? ये सब आएगा. पिछले साल एक पूरा सवाल था प्रॉब्लम ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, और हायर एजुकेशन में ये दो फिगर तो सबसे पहले आना चाहिए कि हमारे पास ग्रेजुएट कितना है, टेक्निकल ग्रेजुएट कितना है, यूनिवर्सिटी कितना है. सही है ना? तो जल्दी बताओ कितना. समझ आ रहा है सवाल? 100 इंडियन में कितना ग्रेजुएट इंडियन होता है? 18 या 80. तुम लिटरेसी रेट तो नहीं बता रहे हो? कितना था? कितना था पेपर में? नहीं, मैं तो पूरा ओवरऑल पूछ रहा हूं. ओवरऑल पूछ रहा हूं. इट्स अराउंड 12% to 13%. 2 साल पहले 12.77 था, तो पॉइंट कुछ और बढ़ गया होगा. अमेरिका में 87%, चाइना में 25% है. यूरोप के किसी भी बड़े कंट्री में जैसे जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड 60 to 62, 57% है. पाकिस्तान में 7 से 8% है. ये सोचिए हम लोग खुश हो लेते हैं. ये नहीं है कि पाकिस्तान में कम है, बट आई होप कि यू शुड नॉट लुक लाइक दैट. आप चाइना ही देख लोगे, डबल हो गया हमसे ना. सो विच इज द फर्स्ट लर्निंग सेंटर? तक्षशिला. एनी फेमस एलुमनाई फ्रॉम तक्षशिला? ये इससे भी पहले का है, ये थोड़ा सा बुद्धा के बाद का. चाणक्य, इट इज बिलीव, had studied at Takshila. So the most famous alumni, समझते ना, of Takshila was what? Who was he? चाणक्य. अच्छा, चाणक्य क्या नाम इंडिया में क्यों इतना मशहूर है? Come on. Famous for what? Okay, one is no. Arthashastra was written by Kautilya, which may or may not be Chanakya. That I told. But what I'm asking, चाणक्य is famous for what? चाणक्य नीति नहीं सुना है. ये नीति आयोग क्यों नाम रखा गया? नीति मीन्स डिप्लोमेसी, नीति मीन्स पॉलिसी ऑल्सो. एंड यू हर्ड साम दाम दंड भेद, सुना है नहीं सुना है? कहा जाता है ये चाणक्य का था. फॉर वेजिंग वॉर एंड एक्सपैंडिंग एम्पायर, स्ट्रेंथनिंग मगध, helping Chandragupta Maurya and Bindusara, and how idea of a state was first given by Chanakya. कुछ लोग कहते हैं the very idea of Bharat Varsha, one country, was given by Chanakya. समझ आ रहा है? इसलिए इंडिया में इनका नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है. अब एक दूसरा सवाल देखो. दिल्ली में एक जगह है चाणक्यपुरी. सही है? कौन बता सकता है that what is the uniqueness about Chanakyapuri in Delhi? All the embassies and high commissions of the world are mostly located in Chanakyapuri, just behind Rashtrapati Bhavan, towards south of Rashtrapati Bhavan. एक लंबा सा पैसेज है, दोनों साइड में अमेरिकन से लेकर, पाकिस्तानी से लेकर, चाइनीज, ऑस्ट्रेलियन, सबकी एम्बेसी, हाई कमीशन. तो क्यों रखा गया उधर उस एरिया का नाम चाणक्यपुरी? समझ आया? क्योंकि वो बहुत बड़ा डिप्लोमेट है, और वहां पे अमेरिकन, रशियन, चाइनीज, जापानीज, पाकिस्तानी सब आए, तो उनको याद दिलाने के लिए. देखो, जब इंडिया से डिप्लोमेसी करना तो समझ के, क्योंकि
तुम्हारे गुरु यही थे। कहाँ? इंडिया में थे ना सबसे बड़ा। और उसके बाइलेंस का नाम है विष्णुगुप्त मार्ग, एक का नाम है कौटिल्य मार्ग, आप कभी जाके उधर देखना। सो दैट वाज वेरी स्मार्टली केप्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई एम श्योर नेहरू के जमाने के लोग का थोड़ा दिमाग इन चीजों पे ज्यादा चलता था, तो बड़ा अच्छा नाम रखा उस एरिया का, चाणक्यपुरी। समझ आ रहा है? चाणक्य नीति। तो मैं पॉइंट क्या था कि एक जैसे टॉपिक हम पढ़ें, उससे रिलेटेड 4 और सवाल, हाथ का हाथ तैयार हो जाए, आपका जीएस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा इन द नेक्स्ट 5 to 6 months. Each of these are very important for your prelims and main. So तक्षशिला जो क्वेश्चन आया था, पता है 3 साल 4 साल पहले क्या आया था? तक्षशिला was situated between which 2 rivers? That was the question. वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, ताकि आप घर जाओ तो खुद से ढूंढो और मुझे अगली क्लास में बताओ। मैं भूला नहीं हूं, ठीक है? आप बोलो तो मैं कहीं लिख के अभी रख दूंगा, आके खोल लेना तुम। लेकिन मैं चाहता हूं कि यू डू योर होमवर्क एंड लेट्स सी वेदर यू कैन फाइंड ऑन योर ओन और नॉट। अभी एग्जैक्ट अगर मैं पूछूं पाकिस्तान में कहां पे है, आसपास कोई बड़ा शहर के साथ रिलेट कर सकता है कोई? इस्लामाबाद सुना है? थोड़ा ऊपर और जाओगे तो उधर ही कहीं पर ये मिलेगा आपको तक्षशिला। इट इज स्टिल एग्जिस्टिंग अ सिटी। जाहिर है कि एंशियंट इंडिया के भी बहुत सारे, जैसे मथुरा है, आगरा है, दिल्ली है, ये सब पुराने शहर हैं। नई बस्ती के लोग भी रहते हैं, तो कुछ कुछ आसार मिल जाते हैं। जैसे आप मेहरौली की तरफ जाओगे तो आपको लग जाएगा ना ये 1000 साल पुराना, यहाँ पे कुछ उर्दू में बोलते हैं खंडर बता रही है इमारत थी ये कभी। तो अब कभी पुराना किला जाओ तो अंदर में आपको पता चल जाएगा 500 years बैक देयर वाज सम लाइफ। सो तक्षशिला इज वेरी मच लाइक दैट। नाउ another important thing you have to write. कितने points I gave you? 1, 2. They introduced gold coins in India. जैसे ये वर्ड आ गया ना इंट्रोड्यूस, इसका क्या मतलब हुआ? It happened first time. So if I ask this question in different style, in which period gold coins was introduced first time in India? 2nd century BC. In which part of India gold coin was first introduced? North, east, south, west, northwest? Clear हो गया? They also minted images of kings and dates on coins. 3 things related to coins contribution of Indo-Greeks. Tell me which 3 things? Gold coins. देखो, इनसे पहले किंग के इमेज कॉइन्स में नहीं मिलते थे। जैसे मौर्यन किंग अशोका है, तो अशोका का कोई इमेज नहीं मिला और कोई पेंटिंग नहीं मिली। सो वी डू नॉट नो अशोका दिखता कैसा था, शाहरुख खान जैसा दिखता भी था कि नहीं दिखता था, क्योंकि शाहरुख खान ने अशोका का रोल प्ले किया ना। तो अगर आप गौर से वो मूवी देखना तो उसमें शाहरुख खान को अपना चेहरा, हेयर स्टाइल कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा। बट ऋतिक रोशन को जोधा अकबर में देखा है, उसको करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अकबर का पोर्ट्रेट मिला है। अकबर के पोर्ट्रेट में हर जगह उसका माउस्टेच है, बिल्कुल ऐसे देखा होगा। अकबर का हाइट तक हमें पता है 6 feet 2 inch समथिंग, तो आमिर खान पे सूट नहीं करता। तो डायरेक्टर ने थोड़ा सोच समझ के लिया कि कोई यंग, हैंडसम एंड टॉल, मस्ट बी टॉल होना चाहिए। तो फ्रॉम कुशान एंड इंडो ग्रीक्स ऑनवर्ड्स द रूलर्स इमेजेस आर नोन टू अस। व्हाई? अब ये बताओ कि इनके कॉइन्स पे डेट्स भी मिलता है, इससे हमें क्या फायदा मिला? वी नो हाउ ओल्ड दिस रूल वाज एंड वी ऑल्सो नो द क्रोनोलॉजी, कि एक किंग के बाद कौन आया, तो उसके सिक्के से हमें पता चल जाएगा द क्रोनोलॉजी। सो हाउ इंडो ग्रीक्स कॉइनेज वुड हेल्प इन द राइटिंग ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। समझ आ रहा है? दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग, कॉन्ट्रीब्यूशन। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नाउ द थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
which they have already asked perhaps last year or last to last year in main 12.5 marks full question, and that you write Gandhar School of Art related to sculpture. Sculpture समझते हो? मूर्ति कला. Now imagine 150 to 200 words you are going to write on Gandhar School of Art. So next 10 to 15 minutes I am going to focus only on this art, and after this you must be in a position to write without reading any book, any material. But that does not mean you don't read it. Study material and the books which I recommended, you have to read it. So you can divide it into points like this. Number one, this art is also known as Hellenistic art. This art is also known as Hellenistic art. Now you must be asking a question. You know, any term which you hear first time, you must clarify ye hai kya, and always start asking yourself till you get the answer. Hellenistic derived from a word called Hellenic. Hellenic means Greek. Hellen suna? Hellenic means Greek. Now, Hellenistic means, write it down, Greek plus others like Roman, like Iranian and like Indians. Okay, no? This is known as Hellenistic. Greek plus others is what called as Hellenistic. तो अगर आपसे सिंपल ऐसे पूछा जाए कि हेलेनिस्टिक क्या होता है जी, दो कल्चर, एक ग्रीक कल्चर और एक ग्रीक प्लस कल्चर. एंड व्हाट आर दोस थ्री इंपॉर्टेंट कल्चर व्हिच आई हैव मेंशन? रोमन, इरानियंस एंड इंडियन कल्चर. इनके मिलने से जो एक नया कल्चर in the form of art developed, that historians called Hellenistic art. Simple. Under this art, write it down, कितने पॉइंट हुए थे? एक ही हुए ना? Point number 2. Under this art, many sculptures were built. Okay, of human and animals. Most dominating one was Buddha. Most dominating one was Buddha in both sitting and standing position. Is that clear? Point number next. These sculptures were made of mud, schist, stucco. Stucco is a kind of plaster. Schist is a stone in which you have layers. That is called schist. समझ आ रहा है?
In Hindi, if we can call paratdar patthar. So there are different types of stones. You know, schist, you have sandstone, you have igneous. You heard these names? So you have marble. So that is metamorph. Okay. Now, as I told earlier, that in your exam like civil services, where they are going to give you maximum marks, what are the features of such art? तो मटेरियल तो हो गया, लेकिन इसकी खासियत क्या, क्या खूबी है इन मूर्तियों की? That you have to focus more. It may be just 3-4 lines. जीएस के लिए इतना काफी होता है, तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूं फर्दर. और आपने अगर देखो ब्रेक करने के तरीके होते हैं, बट मस्ट बी ऑर्गेनाइज. जैसे अगर आपने ये पॉइंट दिया, दिस इज रोमन एंड दिस इज सब पॉइंट लाइक दिस, सो यू कैन नॉट राइट अगेन द सेम ब्रेक. आई होप इट इज क्लियर. और यू कैन यूज इट ए here, so this A is smaller. So make sure that your organization should be very clear that what point you are talking. So first important feature, right? These sculptures have no expression. These sculptures have no expression on face. इससे बोलते हैं बुद्ध. सुना? आदमी हो या बुद्ध हो, सुना ही है मुहावरा. आदमी और बुद्ध का मतलब क्या होता है? कोई रिएक्शन नहीं, कोई फेस पर भाव. इन हिंदी वी कॉल इट, है ना. लाइक बाद में जैसे आप गुप्ता पीरियड का आर्ट जब आप पढ़ोगे, यू वुड फाइंड बुद्धा स्माइलिंग, बुद्धा लाफिंग, बुद्धा इन मेडिटेशन. सो व्हाट आर दीज? These are different emotions shown. So those arts were more developed. In Gandhar art, it is flat face without any expression. एक point हो गया. दूसरा लिखो, the muscles of the body were strong, inspired by Roman art. You're getting? Inspired by Roman art, and many such sculptures were erotic also. Many such sculptures were erotic also. Though some historians would object this word erotic, because it is a term which is subjective term. समझ आ रहा है? But I am just using what is popular one. Next, the hairstyle is curly hair, very fair. नर्सरी के राइम याद है? उसमें एक था ना, the hairstyle is what? Curly. Now here you have to understand carefully. Those who made sculptures of Buddha, Indo-Greeks, never saw Buddha. Buddha died in 483 BC. They are making in 2nd century BC. There is a gap of more than 250 years. So they would imagine, and you imagine as you yourself, Buddha most likely did not have curly hair because he was a North Indian. नॉर्थ इंडियन में कर्ली हेयर कहाँ होता है? देख लो, इसी क्लास में नहीं मिलेगा आपको. यहां से बंगाल तक चले जाओ, एकाक को मिलेगा. लेकिन ग्रीक में जाओगे आप, हर आदमी का हेयर आपको, अलेक्जेंडर का कर्ली हेयर आपको मिलेगा. आप चेक करना उधर. यू गोटिंग? तो बिकॉज दे सॉ देमसेल्फ एंड दे इमेजिन्ड लाइक दैट. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि बाद में जब मथुरा वालों ने बुद्धा का स्टेच्यू बनाया, तो वो कैसे बनाया? उन्होंने बुद्धा को बिना हेयर के बनाया. बुद्धा द बॉल्ड, और बुद्धा ऐसे थे, कुछ ये बॉल्ड थे और एक लॉक था, ये ऐसा देखा होगा, जिसे लॉक बोलते हैं. सो दे इमेजिन बुद्धा एज द पंडित इन नॉर्थ. ग्रीक्स
विथ कर्ली हेयर, बुद्धा का देखो होगा विथ एक लॉक यहाँ पे और बड़े खूबसूरत से बाल हैं उनके, एकदम जावेद हबीब का डिजाइनर बाल लगता है, जबकि बुद्धा वॉज बोर्न समवेयर इन नेपाल, बिहार, यूपी बॉर्डर एरिया. सो आई एम श्योर कि बुद्धा का ना तो बाल वैसा होगा ना ऐसा होगा, ऊपर हेवन में ही मस्ट बी स्माइलिंग, आके देखो कैसा है, ना ऐसा है ना वैसा है. समझ आ रहा है? आपने राम जी की तस्वीर देखी है इमेज पे, सीता की देखी है? I'm just reminding you one interesting point. Ramji by very look likes an North Indian male, and Sita Devi looks like a North Indian female. क्योंकि राम एंड सीता की पूरी स्टोरी नॉर्थ में ही तो पैदा हुई ना. You're getting no? जीसस क्राइस्ट की तस्वीर देखी, मेरी की देखी, द मदर. So he looks like West Asian, not Indian, by very look. This is because Christ का तो फिर भी हिस्ट्री उस वक्त पोर्ट्रेट होता था, लोगों ने उनके लाइफ में ही बनाया होगा. बट राम जी वॉज इमेजिन, शिव जी और विष्णु ऑल आर इमेजिन. सो व्हेन पीपल ऑफ साउथ इंडिया आर मेकिंग, मोस्ट लाइकली द कलर कॉम्प्लेक्शन वुड बी डार्क. When the people of north are making, most likely color complexion would be fair. Similarly dress आप देखना कभी भी राम जी को, तो जो हम लोग के कैलेंडर में दिखता है वो धोती दिखता है और ऊपर से जस्ट रैप कुछ ढका हुआ, but otherwise the body is almost open. Am I right? With some jewelry and maybe a mukut. Sita always in sari. Have you ever seen Sita in a skirt? But have you seen Mary in sari? पॉइंट समझ आ रहा है? पॉइंट क्या बता रहा हूं मैं कि द पीपल हु मेक स्कल्पचर, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोकल कल्चर एंड दे इमेजिन एज दे देमसेल्व्स वर. सो वो एक दिमाग में धीरे धीरे बन जाता है कि बुद्धा जो है हेयर उनका ऐसे ही होगा. और ये इतना पॉपुलर हो गया, जैसे आप बहुत दिनों तक बुद्धा का जितना भी स्कल्पचर बना वो घुंघराला वाला बाल देखा होगा आपने. तो ये एक ग्रीक गॉड का इस इमेज था, एंड दैट व्हाट यू हैव टू राइट, दैट बुद्धा अपीयर्स मोर लाइक अ ग्रीक गॉड अपोलो who has now been hospitalized. Okay, Buddha appears, what I said, more like a Greek god Apollo. ये सवाल आया प्रीलिम्स में, with which god Buddha appears most? क्लियर हो? आगे लिखो. His ear had a long lobe. Lobe is an additional ear below the ear. कान है ना, इसके नीचे एक और कान. दिस इज कॉल्ड लो. अभी ये माइथोलॉजिकल फिगर में होता है, इंसानों में नहीं होता. तो जैसे हम देवी देवता बना रहे हैं तो 2 आंख 2 नाक, 2 कान 1 नाक में, तो पब्लिक को यकीन नहीं आएगा कि ये गॉड है जब तक 3 हाथ ना दिखाएं, जब तक 3 आंख ना दिखाएं. तो पब्लिक जो है एंशिएंट टाइम में, just to make difference between common people and their god, they would say किसी के सींग आ गए. Some would have some additional body part. So in Greek and Roman, this lobe was very popular. So if you see the image of Buddha, you would see this as a new element, which बाद में Indian art में नहीं मिलता है. That is called in English what? Lobe. The eyes are sharp. Like Bipasha Basho, वो नहीं लिखना. Okay. Next, these sculptures were made in 2nd century BC till 2nd century AD. Were both independently built as well as carved in a rock itself, as well as carved
in a rock itself. समझ आ रहा है? उसी चट्टान के अंदर काट दिया को, and some independently, that you can take it from one place to another place, right? Next point. The evidences of such sculptures were found from places like Kandahar, Kabul, Herat, Hadda, Badakhshan, Takshila, Bamiyan, and Begram. Tell me, which city is not in Afghanistan? Takshila is in Pakistan, and rest all are in Afghanistan. Have you heard Bamiyan's Buddha's statue? कुछ सुना है इसके बारे में? It was once tallest statue in the world, which was destroyed by Taliban in 2000, February 27, between 10 to 12 p.m. क्योंकि मैंने लाइव देखा था, and BBC broadcasted the program. The Taliban, you heard it, wanted to destroy, calling it un-Islamic, and during their regime they destroyed one of the most beautiful statues of Afghanistan built in this period and calling it un-Islamic. What is very interesting, just telling you fact, because history is fundamentally based on fact. इससे आपके बहुत सारे भ्रम और गलतफहमी दूर हो जाती है. When they call it in un-Islamic, Islam emerged in 7th century AD. You agree or not? From 7th century till 2000 AD, Afghanistan was always ruled by a Muslim ruler. You are getting not? As deadly as Ghazni and Gauri, who attacked Somnath but did not destroy Bamiyan. है ना? इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है ना, ये सब सोचने वाली बात होती है कि इफ यू थिंक लाइक दिस यू वुड अंडरस्टैंड कि रिलीजन इज नॉट अ रीजन. कुछ पॉलिटिक्स जरूर है, क्योंकि अगर रिलीजन ऐसा होता तो एक से खलीफा आए होंगे, उन्होंने तो देखा ही होगा, तो तोड़ ही देते. That means Taliban is a different breed altogether, and there must be some other reason. I remember at that time Japanese, Indians, English, Americans, Egyptians, they all requested, please do not destroy. Japanese even offered very interesting suggestion, and Egyptian also, that if you don't want to carry on, we will airlift from Afghanistan. समझ आ रहा है? That is very interesting because the Egyptians have maintained some of the most ancient monuments, pyramids. This is all pre-Islamic era, when the people were worshipping idols, you remember? And today Egyptians are Muslims and they are maintaining and protecting that one. So all I am saying is, if Islam or religion is the reason, then why they are still protecting? Because they are keeping it as a heritage, as a culture, as a history. Why Buddhists were more, Japanese were more interested because large number of Japanese are obviously Buddhists, but more because they wanted to protect the culture. But unfortunately most of these now have been destroyed. आप अगर Google सर्च करोगे बामियान, तो एक बहुत लंबा सा रॉक दिखेगा और उसके अंदर जो मूर्ति थी वो खाली है, तो आपको वो पुरानी पिक्चर दिख जाएगी. And it was so big, so tall, so strong that Taliban took artillery shell for 4-5 hours to destroy it. तोप से उसको तोड़ा गया घंटों, तब जाकर वो टूटा. And it was built by Kushana dynasty rulers in 1st or 2nd century AD. So अभी largest statue in the world जो कल second largest था, अब वो हो गया, that is somewhere in North China. I am forgetting the name of province. You can find it out. और एक गुजरात में बनने वाला है लार्जेस्ट स्टैच्यू. कुछ बना होना है इसके, ये सब प्रीलिम्स में पूछा जाएगा.
that Bamiyan statue belongs to which of the following school of art? समझ आ रहा है ना? तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा ये सब मिस नहीं होना चाहिए. And these are the places why I mention these names, क्योंकि यहां से वो मूर्तियां मिली थी of Indo-Greeks. Gandhara school of art. Next point you write. This art was also patronized by Kushanas and Shakas. This art was also patronized by Kushanas and what? Shakas. S-A-K-A-S. Sakas. We will discuss about them shortly. So I have covered almost every important point about Gandhara school of art. Can you write now in 150 to 170 words? Okay. Indo-Greeks is over.